Hello, dear Karishma. Welcome to your 8th Learn class. So, previous class के अंदर हमने कुछ टाइप ऑफ साइंटिस्ट और साइंसेस पढ़े थे और आज हम उसके रूट वर्ड के बारे में स्टडी करेंगे। तो यस, जैसे कि आपकी क्वेरी थी, तो आज ये खत्म हो जाएगा। कोशिश करेंगे खत्म हो जाएगा। कल इसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस में आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हम देखेंगे इसमें बहुत सारे रूट कैसे होते हैं। जैसे हमने इंसेक्ट पढ़ने वाले एक्सपर्ट्स को देखा था, तो उसमें क्या रूट होता है और एटम में क्या रूट होता है। सबसे पहले इंसेक्ट के बारे में। तो इंसेक्ट क्या होता है, जैसे कि फ्लाइज, बीस, बीटल्स, वास्प, ये बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं। अगर आप उनको बहुत गौर से देखो तो इन पे कट दिखता है। तो इंसेक्ट का लिटरली मीन्स होता है इन, माने अंदर की तरफ, और सेक्टस का मतलब होता है कट उसके अंदर। लेकिन हमने तो एंटीमोलॉजिकल पढ़ा था, है ना, एंटीमोलॉजिकल। तो यहाँ पर भी जो टॉम होता है उसका मतलब होता है कट करना। तो एंटीमोलॉजिकल होता है इन, और टॉम मतलब होता है कटिंग, और एंटीमोलॉजिस्ट यानी इन कटिंग जो कि इंसेक्ट है, जिस्ट माने उनको स्टडी करने वाला। तो एंटीमोलॉजिकल लिटरली का मतलब हुआ जिनके अंदर की तरफ कट है उन सारे ऑर्गेनिज्म को, यानी इंसेक्ट को स्टडी करने वाला। एक इंसेक्ट के जो बॉडी पार्ट होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं हेड, थॉरैक्स और अब्डोमेन के अंदर। और इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ और सेक्टर में इसके पार्ट भी होते हैं। ग्रीक में ईसी या ईके का मतलब होता है कटिंग आउट। इससे रिलेटेड हमारे पास मेडिकल टर्म है, जैसे कि टॉन्सिलेक्टमी। टॉन्सिल टॉन्सिल होते हैं गले के अंदर। एक का मतलब होता है उनका आउट की तरफ काटना। टॉमी का मतलब होता है काटना, नॉट टॉमी ऑफ दैट टॉमी, टॉम। ओके, TOME, टॉम। टॉम मीन्स कट। तो टॉन्सिलेक्टमी का मतलब हुआ टॉन्सिल को काटना, बाहर की तरफ निकालना। अ काइंड ऑफ सर्जरी परफॉर्म्ड बाय द डॉक्टर। देन वी हैव appendectomy. So it is also related to cutting the appendix. Then we have mastectomy. Mastectomy. It is related to cutting out the breast. Then we have hysterectomy. It is related to the cutting of the uterus. And then we have prostatectomy. Prostatectomy. It is also related to the cutting of the prostate gland. Now we are very familiar with the atom we study. So it literally means A means negative prefix, where term means to cut. So literally atom means which we cannot cut it further, and which is indeed true. So atom is the last part. Physically we can cut it. Late thereafter we cannot cut it. Okay. In the Greek, ana means up. So anatomical. You know now tom means to cut, ana means up, cutting up of something. So if you see this body, brain, lungs, intestine, large intestine, small intestine, and so many parts, how do we get to know these particular part? Because we cut them up. Okay, that's what we call anatomical. Anatomical means what is inside our body. So there is another word that is dichotomize. Dichotomize. Di means to, and tom means, it means to cut. So there are people who always divide things into two parts, good or bad. So we call them dichtom dichotomized people, or they are basically doing dichotomizing things. Okay. So the pronunciation is dichotomize, dichotomizing. Now we know from the previous classes that epi means top of something. Okay, we understood hypodermic and epidermic. So if we are having itching, rashes in outer skin, so we will visit the epidermis, the doctor who take care of the epidermis, that is outer dermis. Or if we are having something inside our body, we will visit, like inside our tissue, we will visit the hypodermis. So who take care of the hypodermis? So hypo means inside, epi means top. And now you know tom means cut. So if I say epitom, so it means cutting the top of something, cutting top of the something. But the meaning has evolved from the past time. So presently it means the gist,
the summary of something. So if I'm publishing 100 of book, let's say 5 volume of any book, and I give 3 4 pages a brief introduction about it. So I will say it is epitome. I told you that the pronunciation of it is not epitome. Many people do mispronounce it, and I don't want you to mispronounce this. It is epitome. Okay, epitome is the top of something, like the uh, gist of something, summary of something, summary, or we can say condensation. So you can use this word like give me the epitome of the book. So you are basically asking for the content, and we can also say that charisma is a epitome of kindness. Okay, so like epitome here basically means paradigm, model of kindness. Okay, the top one. Epitomize means to summarize something. So next time, don't say, please summarize this chapter, this thing. Say, please epitomize this chapter. And your aura will be 9 plus. Okay. So we are familiar with the love. What is love? Not this one, but love. Like I love book, I love pen, I love dog. So that love basically means. So if you love mankind, so you are a philanthropist. Okay. What are you? Your mic is off. Still mic is off. Not able to unmute yourself. अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो? यहाँ पे थोड़ा सा चैट में लिख दो अगर कोई इश्यू हो रहा है तो. एक मिनट हाँ am I audible? Yes, dear Karishma, you are audible. So we call Okay, it so philanthropist. philanthropist, Yes. philanthropist. I was watching a shot of Salman Khan when a girl was asking, Sir, you are very kind, generous, and you are such a philanthropist. Then she stuck. And Salman says, Yes, I also get stuck मैं in भी नहीं that बोल word. पाता ये वर्ड Hmm? है ना ऐसे बोला था ना उन्होंने? हाँ, लेकिन हम स्टक नहीं कर रहे क्योंकि हम इंग्लिश के मास्टर है. वी आर जैक ऑफ द सी. ओके, आप और मैं. Philanthropist. फिलांथ्रोपिस्ट. What was that? Philanthropist. यस, फिलांथ्रोपिस्ट और फिलांथ्रोपी. Philanthropist. Yes. Oh, We have another philanthropist. word. Phil basically means love, and which Love. kind of love you better know now, right? So it is mean I love book, I love dog, etc. It does not means this picture is showing. Okay, it can be. Okay. Okay, we have the next one that is philander. So okay, ender or ender is related to the male. So if you love male, so you are a philander. No, if anybody loves male, so we can say he's a philander. But it has a little bit of, we can say, derogatory sense. So it is basically sexually or promiscuous attraction to the males. So phil means love, andros means basically male. And now we have very good word that is philosophy. Okay, in India we call darshan, Philosophy. and in western we call it philosophy, and they are not like synonym of each other. Darshan is very very different from the philosophy. I will tell you in the class of philosophy, but not now. Philosophy, phil means love, sophos means knowledge or wisdom, and I want you to be a philosophist. Okay, philosopher, not philosophist, very sorry. Philosophy, Philosophy. sophos means love for the wisdom. Then we have Philadelphia. Philadelphia. So this word basically, there was a city called Delphia. Literally, it means city of brotherly. So his idea, there was a person. So he like colonize entire particular landmass, and he settled down there, and people also get settled down there. So he made a kind of brotherly, very very peaceful harmony city, and it was named as Philadelphia. So it basically means city of brotherly love. Then we have
Philharmonic. Harmony basically means peace. Phil means love. So if you love music, harmony, peace, you are a philharmonic. Okay, philharmonic. Then we have very beautiful word that is bibliophile. Bibliophile. Biblia means book or file means love. So if you love books, especially collecting books, okay, people have different type of book in their shelves. So if so we for those people we can say they are bibliophile. Okay. Then I am not, and I am probably think that you are also not. Some people, if they love British people and they admire them, I admire them in some of the respect, not for colonizing us. Okay. So we can say them Anglophile. Anglo basically means British people. So in history, you also come across that Anglo-French War, Anglo-Dutch War, Anglo-Mysore War, and so many times. So it basically means British and Maratha War, British and Mysore War. So Anglo means British people. So those people who love British, they are Anglophile, Anglophilic, Anglophile. Now we discussed about the social and semantic studies in the previous classes. Okay. One who study the social structure, society, their relations, who is he? Can you tell? Who is he? Hmm. Sociologist. Yes, champion Karishma. And one who studied the psychological impact of the language, culture, etc. Who was he? That was philosophist, philo, Semanticist. semanticist. Yes. Okay, we have Oh, studied about the semantics. So it is the study of meaning and effect of the words. So I told you that our words so are actual like actions. Okay, so in the past time, the condition of women was not that much good. So they were like we can say vulnerable section of the society. So in the 60th century, 15th century, we can find dozens of writing against the women's like they were being considered born to be slave, etc., etc. So we can say from the word we can figure out the condition of women. Okay, so our word truly describe our psychological condition. Okay, don't you think now? Yes, I think. Say. yes, I think. Okay, so semantics is the study of these, and semanticists are those people who are studying, who are deriving the psychological perspective from the words, okay, from the past books. And even I told you Marie Curie about the Marie Curie. So she studied in such a harsh condition, such a hard condition, and I think she was become one of the female Nobelist thereafter. Women are Yes, not Mother Teresa. Mother Teresa, among others, Sarojini Naidu, not Sarojini Naidu, Jyotiba Phule, Savitribai Yes, Phule. Jyotiba Phule. Savitribai Phule has, Savitri, Jyotibai Phule तो his her husband थे ना उनके तो. yes, yes, yes. He also had done tremendous work for the deprived people, and Savitribai also worked for the deprived people. So they really did hard work in their time. Okay. Then we come across the sociology. It is a study of the society and their behavior, culture, and so many things. And then we have anti-social. So anti-social basically mean anti means against. So they don't like social activities. And we have asocial here. Okay. Now you will tell me without seeing the meaning, what would be the meaning of asocial? Where you know a means negative prefix and social. You better know what is social. Introvert. No, no. Yes, yes, yes. You can say introvert. Wonderful. Introvert. Interest. Asocial, negative, social. Against the society. Okay. They don't like society. They are asocial. We come across the same root word that atom. That is, we cannot cut it further. Literally, it means. हाँ. Okay. So we discussed the sociologists, those people who study the society. So socio basically means companion, okay? It is based on the socius word, and you can find this root, the etymology in numerous words, okay? Companion. And logos, मतलब what was the meaning of numerous? अच्छा large number ना? logos, science and study. Are you asking Meaning of for numerous. humorous, Numerous. numerous?
lot of, Yeah. plenty, Yeah. pretty much. Okay. Okay. Antisocial person, those who don't like the society, and and so asocial person, so they basically avoid the social interaction, etc. Okay, exercise time, dear Karishma. Are you ready for that? Yes. And I am very sure that you will enjoy this exercise time. Okay, you must be saying Okay. that रोम रोम भाइयों सिस्टम फाड़ देंगे. जी, ये इतना गंदा लगता है ना मुझे। क्या नाम है इसका? कौन था वो? छोड़ दो उसके बारे में. सिस तो मैंने वो सोचा था कि क्लास जो है बहुत ही ज्यादा सीरियस हो रही है, तो इसलिए कुछ फनी चीजें करते हैं. ओके, आपका एंगेजमेंट ओके। बना रहे. ओके, तो पहला मॉड्यूल जो हो रहा है वो हमारी एक्सेंट ट्रेनिंग हो रही है, हमारी प्रोनाउंसिएशन ट्रेनिंग हो रही है. ठीक है, सो द राउंड वन बिगिंस नाउ. नाउ वी विल प्रोनाउंस द वर्ड विद द हेल्प ऑफ द टेक्स्ट रिटन ओवर हियर. मे आई प्रोनाउंस? यस, यू आर, यू कैन, यू मे. एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एंटो So एंटोमोलॉजी, here this is inverted E. एंटोमो We call it a. Okay, a. Entomol. So those words which are written in the capital. So we take emphasis, stress on those. Mologist. एंटोमोलॉजी, Okay, mologist. Ento, not ento. Very sorry. Entomology. Entomology. एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, Hmm. So more we practice, we will say it's entomology. Entomology. Okay. एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, The very next word is waiting for dear Karishma. एंटोमोलॉजिकल, एंटो Entomological. एंट एंट एक मिनट, एंटोमोलॉजिकल, Yes, entomological. Okay. The next one is eccentric. एक्सेंट्रिक, एक्स Eccentricity. Then we have एंटो atom. Okay. आटम, The next one, atomic, atomy, atomortical, tom, diatomy, dichotomy. Okay. डाइकोट, A dichotomy, डाइकोटमी, dichotomous, dichotomize. Okay, I think you know better now. Now, these are waiting for you. philanthropy, philanthropy, Wow, philanthropy, wonderful, phil, philanthropist, 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 wonderful. philan, philanthrop, philanthropic, philanthropic, Yes, philanthropic, philanthropic, philanthropic. Yes, very philanthropic, good. okay, philander, philander, Wonderful. philanderer, philander, Philanderer, philanderer. Okay. So those who philanderer, are expert philanderer, in the behavior of the philander, those who love male in little derogatory sense, sexually attracted towards them, we can say. So those who study expert in catching those people, they are philanderer. Now okay, we have eccentric here. Eccentric basically means a strange person. Those who have very, very strange, unusual behavior, we call them eccentric people. So the pronunciation is eccentric, okay? Eccentric, eccentric. Strange and eccentric. unusual behavior. We has got a idiom for this. We call it queer fish, okay? Queer fish. दादा, मैंने आज एक इस इसका एक वो पढ़ा था, सिनोनिम, Strange behavior के लिए. बिजार है ना? हम्म. बिजार, बिजार, Bizarre. Can you tell? Can you spell it? बिजार, BI जेड जेड ER, बिजार। ओके, हो सकता है. एक एक बार पढ़ा था, एक और पढ़ा था, रुकिए रुकिए है ना, आज ही पढ़ा था। हाँ, पैक्यूलियर, ओके, वंडरफुल, impressed. So the next पैक्यूलियर, section. So from here you can bibliophile. It is फाइल, bibliophile, फिल, not Leo. Bibliophile, बिब्लियोफाइल, bibliophile. Repeat it.
Biblio bibliophile fiel bibliophile. Yes. I think you correct me this time. Yes, it is bibliophile. Anglophile, we have Anglophile. semantics, we have Cemeteries. then we have semantic. Cemetery. Now the word is sociology. Sociology. No, no, not logy. It's a sociology. Sociology. Sociology, कितना sociological. कितने 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 खतरनाक So, वर्ड है ये भगवान. मैं बता सकता हूँ कि करिश्मा कैसे इंग्लिश बोलती है. इज सी इंटरमीडिएट और शी इज एडवांस, लुकिंग ऑन टू ओनली योर प्रोनाउंसिएशन. ओके. और मैं बता देता हूँ, लोग आपको ओके. प्रोनाउंसिएशन के बेस पे जज करते हैं. ओके. है. वंडरफुल. हमने पहला राउंड खत्म कर लिया. अब हमारे पास आ रहा है सेकंड राउंड. आर यू रेडी फॉर द सेकंड राउंड? दैट इज मैचिंग द राउंड. यस. नो. यस. यस यस. सो हमारे पास है ये. और यहाँ से हमारे पास मैं वर्ड बोलूंगा, आप क्विकली इनमें से फटाफट से इसकी मीनिंग बता देना. ठीक है. ओके. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटोमोलॉजी? एक मिनट. हाँ. एंटोमोलॉजी. ई. ई. यस, वंडरफुल आंसर. दैट इज साइंस डीलिंग विद द इंसेक्ट. सो कैन यू टेल द मीनिंग ऑफ द एक्सेंट्रिसिटी? eccentric, strange behavior. एक मिनट फिर. हाँ. आई. Yes, wonderful answer. Can you tell meaning the anatomy? एनाटोमी. एनाटोमी तो इतने बार पढ़ा है. एनाटोमी एनाटोमी. अरे रुकिए रुकिए. हाँ. एना मतलब होता है अपर. एक मिनट. अप 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 होता है ना. एक मिनट. एक मिनट. सेंस ऑफ थिंग इज अंडर स्टेज ऑफ टू स्टेज starting of sense of meaning that which no It is after E. J. J. Yes, Is it wonderful, impressed. Anatomy basically means physical structure. Okay. Now, can you tell the dichotomy means? dichotomy means होता है J. Yes. Condition or state of being is split into two parts. Now, can you pronounce the next word that start with E, B, I, T? Be cautious little. 1 minute. हाँ. 1 minute. 1 minute. Epitome. 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 You were nearly correct. Epitome. So, Epitome. what Oh. is the meaning of the epitome? Epitome was a representation of whole. F. Look from the first and you will get the Oh, meaning. B. B. B, B. absolutely correct answer. What is written in B? Can you read? Philol Philology. Philology. Summary representation of the whole. Yes, philology. So, can you tell what philology means? Philology means, I think, Okay, skip the philology. Now, tell me the meaning of the semantics. linguistic. D. D. Philology, yes. Impressed, Karishma. Second time. Now, tell me the meaning of the semantics. है. The next word, semantic. Philology is the meaning of the philology is linguistic, right? Now tell me the हाँ. meaning of philology. Philology और semantics. Yes, इसका मतलब है. semantics.
मैं कंफ्यूज, वैसे मैं कंफ्यूज आत्मा बन जाती हूँ। सेमेंटिसिस मतलब होता है, एक मिनट ना। सी। Science and music. Yes, wonderful. Impressed. Sociology. सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी मतलब होता है कुछ तो होता है जी। Hmm. Charitable work. No, sociology नो does नो not. नो, इट्स फिलेंथ्रोपी है ना। Yeah. एक मिनट है, एक मिनट। सोशियोलॉजी मतलब होता है कि You are pronouncing it again wrong. It is sociology. सोशियोलॉजी। Hmm. एक मिनट, सोशियोलॉजी दैट इज एफ एफ। Yes, wonderful. Science of the social structure and custom. Now, can you tell, forget this, skip this one. Philanthropy. Okay, you have told it. Okay, wonderful. So we have a little bit more. Okay, can you tell me dichotomize means? And you will tell definitely. Dichotomize means F, to split in two. Yes, wonderful. What is the epitomize means? Okay, so I think we have Epitomize, discussed. Okay, epitomize means okay. So philander, you can tell me what is the meaning of philander? philander means, एक मिनट हाँ, I think J, Yes, to exaggerate in external sex. Wonderful. Now, will you tell the bibliophile means? Bibliophile or bibliophile means, bibliophile? एक मिनट दादा, it's H, Yes, H. Wonderful answer. But actually, we don't call it H. We pronounce it H. ओके। H, भूल जाओ। ऐसे ही बोलना। H, वरना सफर होगा। भगवान बताओ। एंग्लोफाइल। एंग्लोफाइल। एंग्लोफिल। Anglophile, wait, D, Yes. Okay. Okay. We have discussed all of them correctly, and you better know. Round three. Are you ready for the round three, हे dear Darshana? भगवान ये राउंड रिकॉल करना होंगे, आएंगे नहीं यार, हार के सब। Can you recall the word? So I will tell the meaning of the word, and you will recall. Okay. So I think your condition is like this. Oh my goodness. But यार don't worry. We have round four too. Okay. So round three is, can you recall the word pertaining to study of social custom? सोशल कस्टम, सोशोलॉजिस्ट, Yes, sociologist. Sociology. Pertaining to सोशियोलॉजिस्ट, psychological सोशियोलॉजिस्ट effect of the word. जी। This word start with this रुकिएगा S. Come on, ओह girl. रुक, You अच्छा can do it. सेकंड वाला बताना है। Yes. साइकोलॉजी इफेक्ट्स ऑफ वर्ड्स दैट इज वर्ड्स है ना, सोमेट 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 Semanticist. सोमेट Okay, wonderful. देखा, याद हो गया। आप थोड़ी मेहनत करो तो और याद हो सोमेट जाएगा। 19-20 का ही फर्क था बस। Semanticist. Lover and collector of सोमेट the book. दैट इज बिब्लियो बिब्लियो File. स्टिक Bibliophile. बिब्लियो Bibliophile. बिब्लियो Okay, wonderful. बिब्लियोफाइल, Mhm. सॉरी, Make I'm sorry। love promiscuously. Promiscuously. Meaning attracted towards love male. मेल Hmm. that was philanderer, Yes, wonderful answer. Pertaining to the science of linguistics. linguistic Hmm. that was philosophy, Philology. philology, sorry, philology तुमने पिछली बार बताया था बहुत करेक्टली। पर्टेनिंग टू द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। that was, ये तो मेरे को याद है हाँ, एक मिनट हाँ, एपिडोमो एंड एप we have एंड discussed it. क्या था Yes. ये, N means inside, Tom means cut, and the only thing is the study of it. एंटोलो एंटोमोलो एंटोनोमी जो एंटो एंटो क्या था Entomologist. एंटो
हाँ, एंथ्रोमोलॉजिस्ट, क्या एंथ्रोमोलॉजिस्ट। बात है, वंडरफुल। वन हु एडमायर इंग्लिश कस्टम्स। एंग्लो, दैट वाज एंग्लो फाइल। कस्ट, फिर एंग्लोफाइल, एंग्लोफाइल। एंग्लोफाइल। Small particle, so called, we cannot cut it एटम, further. एटम, Pertaining to the structure of the body. pertaining of structure of body, that was atomy, atomy, Anatomy. anatomy, Okay, anatomy. we still have few words, but you can like. So, do you want to do revise all these words too? I'm not getting your response. Yes. Does it means yes or no? No. Okay, we have the round four, which is very, very small, and thereafter we are going to medical hospital, medical treatment. So Okay, the last we are having is a little bit quiz. So दादा ये student of, लास्ट है ना आज का? yes, end of the थैंक, science and scientist. We are ओके, going to start from. I will not tell you here what we are going to start from tomorrow. आई नो दादा, आई नो। Yes, you better know. Okay, the student of the star quickly. यस, द स्टूडेंट ऑफ स्टार्स, एक मिनट, दैट इज बी, बी, Astronomer. Student of plant life. प्लांट बॉटनिस्ट, दैट इज ए, Student of the insect life. दैट इज दैट इज बी, एंडोटोमस। ऑल्सो उनके साथ ही वो वर्ड भी बोलो, उससे ना अच्छा ओ लगेगा। सॉरी सर, स्टूडेंट ऑफ एंटोमोलॉजिस्ट। मीनिंग एंड साइकोलॉजी ऑफ वर्ड, मीनिंग एंड साइकोलॉजी ऑफ वर्ड। But that is cementist, सिमेंटिसिस्ट, ओके। cementicist, cementicist. एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू। Living tissue, that is biopsy, biopsy, बायोप्सी। biopsy. दैट विच Yep. अरोसेस सेक्सुअल डिजायर। Sexual desire, that is I think a B. Apo, no, no, एपो। no. A. व्हाट इज द वर्ड? Philander, 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 फिलांडरर, ओके, वंडरफुल। सेल्फ गवर्निंग। philander. That is self-governing. That was uh, autonomous. B. Autonomous. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड? क्या था, थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। क्या आप इस वर्ड को प्रोनाउंस कर सकते हैं? क्या है बी? ओके, ओके, ओके। ऑटो, अटो, सॉरी, अटोनोमस, एटोनमस, Autonomous, एटोनमस, ऑटोनमस, autonomous, okay. Part that ऑटोनमस, represent whole, summary of something. होल, You सॉरी, can't afford to mispronounce this word this time, okay. दैट इज एंटोमोलॉजिस्ट। Part that represent the whole, like the summary of something, content of something, gist of something. ओ दैट इज एपिटोमी, एपिटोमी, मैंने कहा था एपिटोमी। कि तुम गलत प्रोनाउंस मत करना, इट इज हाँ, एपिटम। हाँ, आई एम ट्राइंग, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, एक मिनट। एपिटोमी, यस, एपिटोमी। ओके, वंडरफुल। One who physically travels in the space. दैट इज एस्ट्रोनॉट। Astronaut. Okay. What is the etymological meaning of the astronaut? Let's check your एस्ट्रो meaning. दैट इज स्पेस। Etymological means ओ सॉरी, astron means हाँ, बताओ, etymological meaning क्या क्या होता है? बताऊं? Etymological meaning क्या होता था एस्ट्रोनॉमी का? स्टार। Star sailor. Astron means star. Nautical was related to the ship navigation. Okay. Star sailor it हाँ, literally means. I'm not saying कि आपको एटिमोलॉजिकल मीनिंग एस्ट्रोनॉमी का आना ही चाहिए। अगर आपको एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉट का मीनिंग भी आता तो चलेगा, लेकिन नॉटिकल तो है ना, नॉटिकल तो बहुत जगह है। नॉटिकल माइल है, बहुत सारी शिप वगैरह में। हमने नौशिया के बारे में बात करी थी, जो शिप डिसीज होती है, इनमें तो वो वर्ड आ रहा है ना। वन हु हैज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ये ओके, सो पढ़ाया था मेरे को। हाँ, ये फिलांडरर वो आदमी था जिसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, ठीक है। इसी का होता है। हम्म।
अच्छा, फिलैंडर। अच्छा वर्ड सिखाया था, फिलैंडर। फिलैंडर, फिलैंडर। किसी को चिपका सकते फिलैंडर। हो। तो हाँ। कॉन्ग्रेचुलेशन डियर करिश्मा। दादा, तो किसी किसी ने आपके ऊपर चिपका दिया तो। क्लास वायरल, ये क्लास वायरल होने वाली है अगर यूट्यूब में सॉरी जाएगा सॉरी। तो, ठीक है। एडिट करना तो आपके हाथ में है ना दादा। नहीं, मैं कुछ नहीं एडिट करने वाला। इतना सारा काम करना होता है, उसके बाद फिर मैं इसको भी एडिट करके काटूं, एक एक जगह पे ढूंढूं, बग हंटिंग अरे, करूं इसमें से। नहीं, मैं पूरी वीडियो को रॉ डाल दूंगा, लास्ट जो होगा देखा जाएगा, लास्ट ठीक के है। 4 मिनट पहले दादा, लास्ट के 4 मिनट पहले देखना, उसको कुछ कट नहीं कर होता, देना। दैट इज ओके। आप अपने टीचर की बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हो कहीं के लोग, और क्या। अरे दादा, रिस्पेक्ट दिल से होती है दादा। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशन डियर करिश्मा, आपने कर लिया, और बहुत सारे वर्ड अब आपको थैंक ऐसे याद हो गए होंगे। उम्मीद है आप एक यू। बार फिर से क्विकली 20 15 20 मिनट। फिलैंडर। फिलैंडर याद हुआ दादा मेरे को आज। हाँ, फिलैंडर। फिलैंडर। अड़ोस हाँ, पड़ोस में और चिपकाने को बोला था, मेरे पे चिपकाने को नहीं बोला था। ठीक है। हाँ, एक और वर्ड, सेमेटिस्ट। सोमेटिस्ट। सिमेंटिसिस्ट। सेमेंटिस्ट। और भी याद हुई सिमेंटिसिस्ट, मेरे को। सिमेंटिक्स। हाँ, इतना तो भी एक बुरा बार। नहीं था, अच्छा था। बिकॉज ऑफ यू मेरे को याद हो गए हम्म। काफी ज्यादा। ओके, तो एक बार और अच्छे से देख लेना, यहाँ पे बच गई ओके। है। और एक वर्ड पे जो था फिलांडर, शायद मैंने शुरुआत में मीनिंग थोड़ी सी अलग बता दी थी फिलांडर का, उसको भी देख लेना। बट एक बार गो थ्रू कर लेना सारे वर्ड्स के साथ, और टाइम मिले तो जो एटिमोलॉजी रूट वर्ड मैंने बताए हैं उससे रिलेटेड कुछ और वर्ड प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। कोई नया वर्ड ओके। वैसे मत देखो, मतलब सिनोनिम देख सकते हो, बस उससे रिलेटेड रूट वर्ड से पढ़ना बेस्ट रहता है, ओके। So I'll see you in the very next class, and which is going to be very, very interesting. So till now, if you are asking anything, you can. Then we are going to end this session. No, the I'm excited for the Next tomorrow class. class. Okay, Next wonderful. class, sorry. So let's meet you in the tomorrow class. I will Ne- submit the PPT to you. Okay. Have a Okay, good, Dada. great night, dear Karishma. Thank you so much. You too, Dada. Okay. Okay.